Perfect. So I think what we can start off with is the idea was to see if we can talk about cancer prevention, early detection, and all of that. Many of you have been through that journey, and you are actually you aware of it, and you've been through the process of it. So I thought what better way to start than start with the questions that you may have about your own journey or somebody else's journey, and then we can sort of work our way around. So let's let's keep the forum open and let's see what questions that you may have about cancer prevention, cancer diagnosis, cancer treatment, and then we will go through anybody. Just unmute yourself and shoot. I could, while you're thinking of questions to ask, I'll start off with maybe let's talk about the prevention part of it because while some of you may have been through it, you will have your family members, friends, and others who may be interested also in preventing how do we, prevent cancer. So very often I get asked this question, doctor, I have never eaten non-vegetarian food. I've never smoked. I've never drank alcohol. Why did I get cancer? What did I do wrong? So, first of all, there is nothing probably that you did wrong in terms of your lifestyle, and you still got the cancer because many of the cancers are actually, we don't know why they come. The medical literature has given us an idea as to what are the possible causes of cancer. They are not certain, what are the possible causes of cancer. And many cancers we know happen because of these reasons, but a large majority of cancers still don't know why they happen. So, for example, if you look at lung cancer, the commonest cause of lung cancer is smoking or tobacco chewing. If you look at, say, for example, a cheek cancer, again, chewing tobacco is a big cause for that. But many cancers, we don't really know the reason for that. So what do we do? I mean, you don't know how to why it happens, and then how do we then prevent that cancer? But there are some basic things that we can do, and these things have been time tested and have been tested in various clinical trials and studies. And what has come up is the first and most important thing is our diet. And diet plays a huge role in who we are. If you realize that half of our body weight, nearly half of our body weight, is actually not human. So half of it is the microbiomes that we have, the bacteria in our gut, and they form a large majority of our body, and they are affected by the diet that we take. Plus, so for example, if you're having diet which is very high in say spices, then there is a chance that because of that there could be injury to your food pipe, to your stomach, and you may have a risk of developing esophageal or food pipe cancer. Or if your diet is very rich in fat, then that may increase the chance of your breast cancer or colon cancer or the cancer of the large intestine. And we do see that people who are, especially from the Western world, who consume large quantity of red meat and do not consume as much as um, the greens or the salads or vegetables, they have a higher incidence of colon cancer again. So your diet is going to influence what is the risk that you have of cancer. So what do we advise as doctors to prevent cancer from diet point of view is a square diet, which has, if you look at the Indian diet, is fairly squared. You have your carbohydrates in the form of your rice and roti. You have your fats in terms of your ghee and oil, and then you have your proteins in terms of whether it is dahi, paneer, milk, or butter, or your non-vegetarian chicken and fish and everything.
And then you have your micronutrients coming in from various vegetables and fruits and fibers coming in from fruits and vegetables again. So that's a fairly smooth diet. And so whatever diet you may consume, you don't have to consume strictly Indian diet, but whatever diet you may consume, if we avoid excess of a particular factor, excess of carbohydrates or excess of fat or excess of spices or excess of anything is bad. You would have seen, and it's very distressing for me to see, these influencers, the breed that has come up these days on social media. They would promote a particular type of diet. They would say, oh, you have to eat this sort of diet and, fruit diet only, or only protein diet, or only fat diet. And we see disastrous results because of it, because it creates completely abnormal, um, situation in your body. Your body is not meant for such a diet, and that causes problems. So a square diet is definitely a very important thing. So does anybody have anything to share about their own diet or their own journey of diet? Anything specific that you want to add from diet perspective, or any learnings that you had, or any experiences that you had? So, Yeah, Miss Nisreen. so how sugar can cause increase of cancer cells? Is it true, sir, or in what way can you add and help us in that? Yeah, I think in last few years, this has been shared widely that cancer thrives on sugar, and that is a complete misinformation. Because the sugar that you're consuming at a macro level, and it's going in your intestines. That sugar does not get carried into the bloodstream and then go and feed the cancer. It doesn't work that way. That sugar then gets digested, gets absorbed as glucose in your body, and then either gets utilized as energy or gets stored as fat. Where does this myth begin is from the fact, and this is a fact, that cancer cells consume more energy in the form of glucose, because glucose is a very easy energy source that is available. So if you look at the basic investigation that we use, say for example, we commonly use PET scan as an investigation. And in the PET scan, what we do is we give a particular dye, which is a sugar dye. And that sugar is then taken up by the cancer, and that is how we detect cancer on a PET scan. But that does not mean that if you eat sugar, it's going to go and feed your cancer. No, it does not happen that way. You would also see patients, cancer patients who are slightly at an advanced stage, start losing weight. Weight loss is one of the common sort of symptom that we see in patients. And why does that happen? Because the cancer cells are rapidly dividing and they are consuming a lot of energy. And they are consuming that energy in a way that they consume so much energy that they're depriving other parts of the body uh, to consume energy. So पूरे शरीर में जितनी एनर्जी है वो सारी कैंसर को चली जाती है और फिर पेशेंट का वजन कम होना चालू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपने शक्कर खा ली तो वो शक्कर कैंसर को डायरेक्टली जाएगी। पर जैसे मैंने कहा अभी कि एनी एक्सेस इज नॉट गुड। तो अगर आप पूरा दिन भर मीठा खा रहे हैं या हर रोज बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। उस पे कंट्रोल रखना चाहिए, बट देयर शुड नॉट बी, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मैं काफी पेशेंट्स देखता हूँ कि अरे नहीं अभी कैंसर हो गया, अभी मैं शुगर कंप्लीटली बंद करूंगा। दैट इज ऑल्सो बैड बिकॉज योर बॉडी नीड्स सम नेचुरल शुगर। सो आपको शक्कर कम खानी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो नॉर्मल क्वांटिटी खाते हैं शक्कर की, उसकी जितनी कम कर पाते हैं उतनी अच्छी है। बट नेचुरल शुगर्स हैं जैसे फ्रूट में है या सम ड्राई फ्रूट्स में है, वो डेफिनेटली दैट इज वेरी सेफ। बट आपको चाय में शक्कर लेने की आदत है और तो उसमें ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। So the myth that
cancer thrives on, if I eat more sugar, my cancer will spread. As per today's evidence, that is not true. So we don't have to completely stop sugar intake. पूरी शक्कर खाना बंद करने की जरूरत नहीं है, but you should restrict it to a certain extent, definitely. Thank you, sir. You're going to see the chat. Any other questions about diet, or does anybody want to share कुछ diet के बारे में आपके? सर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें? बंदा जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपके। मैं ये क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ चैट पे, मैं आंसर करता हूँ उसको। बट इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सवाल का आंसर करने के पहले मुझे ये आपको एक्सप्लेन करने दीजिए कि इम्यूनिटी क्या होता है। हम ये आजकल शब्द बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं कि इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो ये जो इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, ये कोई ऐसी मैंने ऐसा कोई ब्लड में पैरामीटर नहीं है कि अच्छा ये बढ़ जाएगा तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो शुगर है या कैल्शियम है कि वो बढ़ गया अच्छा है या बुरा है। इम्यूनिटी इज बेसिकली हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति, या जो शरीर के बाहर से या शरीर के अंदर से भी जो शरीर के लिए हानिकारक चीजें हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट और उसको हम कैसे रोक सकें, ये एक है। इसमें दो टाइप की इम्यूनिटीज रहती है। एक रहती है सेल्यूलर बेस्ड इम्यूनिटी, कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि एट बेसिक लेवल एक तो है कि जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड काउंट बोलते हैं। जैसे आपका ट्रीटमेंट कभी हुआ रहेगा तो उसमें हम आपको बताते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराओ, हम व्हाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं कितना है। वो व्हाइट ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे शरीर की आर्मी है, और वो जाके कोई भी इंफेक्शन आता है उसको जाके वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ कैंसर, व्हाइट सेल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो वहाँ जाके कुछ नेचुरल हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, लाइक वी कॉल देम नेचुरल किलर सेल्स, वो वहाँ पे आए और वो कैंसर को मारे। ये एक सेलुलर इम्यूनिटी है। और दूसरी इम्यूनिटी रहती है जो जो डिपेंड करती है कुछ सिक्रीशंस के ऊपर, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह हम बोलते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी, प्राइमरीली हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारे शरीर को हेल्दी कैसे रखें। अभी अगर आप देखेंगे कि जो इम्यून सेल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए ना तो कोई दवा है, ना कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज आप कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आपका खाना पीना हेल्दी है, अगर आप बाकी एक्सरसाइज वगैरह मैं डिटेल में बाद में बात करता हूँ वो करते हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसमें थोड़ा बहुत रोल ये भी रहता है कि आपका विटामिन लेवल कैसा है। सो हम एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है या कैंसर है, उसमें प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि हमारी शरीर काफ़ी सारे प्रोटीन्स खर्च करती है ये बैटल, या ये जो उनका कैंसर सेल्स या इन्फेक्शन और हमारे इम्यून सेल्स की जो एक जंग होती है, उसमें प्रोटीन्स काफी खर्च होते हैं। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप प्रोटीन्स का प्रमाण आपके डाइट में बढ़ाइए। तो ये काफी जरूरी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें, इसका अगर मैं सवाल करूं, जवाब दूं, तो वो होगा कि आप आपकी डाइट अच्छी रखिए, काफी सारे फल खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, एक स्क्वायर डाइट लीजिए, और एक्सरसाइज या बाकी चीजों पे ध्यान दीजिए, और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आपको काफी सारी चीजें उसके साथ करनी है। टीना पूछ रही है यहाँ पे कि इट इज सेड दैट मिल्क ऑल्सो यू शुड अवॉइड। Again, this is completely not based on any data. There is no scientific evidence which says that milk products are bad. But one thing that happens in terms of milk products also, कि अगर आजकल हम देखें कि ये जो दूध है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो भी हमें देखना चाहिए। तो
काफी बार ऐसे देखा जाता है कि ये दूध बनाने के लिए पशुओं को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और उसमें जो हार्मोन्स रहते हैं वो मिल्क में भी कभी सीक्रेट हो सकते हैं, और वो आपको दूध में से अगर मिलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। बट द चांस ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी लो। अगर उसमें हुआ भी तो उसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रहती है। तो स्पेसिफिकली मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने की ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले एक फैट डाइट आया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी वीगन डाइट की बहुत बात चल रही है कि वीगन डाइट बहुत अच्छा है। द प्रॉब्लम दैट हैपेंस विद इंक्लूड एक्सक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स कि आपका फिर प्रोटीन का इंटेक कम होता है। और ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश में पहले से बचपन से आप कितना मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। जैसे मैं देखूँ तो मुझे दूध पीने की आदत है, मैं दही खाता हूँ, मैं पनीर बहुत सारा खाता हूँ, मैं छाछ पीता हूँ। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मिल्क। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने अचानक पूरा दूध मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिए तो इट विल एक्चुअली हैव मोर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन माय बॉडी, बिकॉज माय बॉडी विल नॉट बी एबल टू कोप। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे शरीर का एक पार्ट है, उनका पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आपने कभी भी सडनली डाइट चेंज किया, जो आप एक पर्टिकुलर कोई चीज खा नहीं रहे हैं और उसको खाना चालू किया है, कुछ खा रहे हैं और उसको एकदम से बंद कर दिया, तो उसके वजह से आपका पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट इज बिकॉज आवर इंटेस्टाइनल सिस्टम कैनॉट कोप विद दैट। तो मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो, करंटली हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है बताने के लिए कि मिल्क प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बंद करने चाहिए या वो नहीं लेने चाहिए। बट व्हाट आई सजेस्ट इज यू टेक इट फ्रॉम अ गुड सोर्स, कि जहाँ पे आपको पता है कि so now most of the you know reputed companies, say Nestle, Amul or whatever, they would have their own processes to ensure safety. तो वो आप कर सकते हैं, या इफ यू हैव अ रिलायबल सोर्स वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट essentially bad. As of today's evidence, they are not proven to be bad at all. So, Dasas is asking vitamin and would vitamin and zinc help fight infection? Vitamin C or zinc help fight infection? So, vitamin C is a very good antioxidant, and zinc is a trace element which is essential for body, and it is very essential for our white blood cells. So, you're right. Zinc का प्रमाण हमारे शरीर में बना हुआ रहना चाहिए. Vitamin C is also a very good antioxidant. Um, so in any patient who's undergoing treatment, which is stressful, say chemotherapy, radiation, you can supplement it with multivitamins, but you have to be careful. And I strongly recommend कि आप आपके डॉक्टर्स को पूछिए कि ये दवाई हम ले सकते हैं क्या। जैसे रेडिएशन के साथ हम एडवाइस बिल्कुल ही नहीं करते कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लो। सो विटामिन ई, विटामिन सी, वी वुड नॉट एडवाइज ड्यूरिंग रेडिएशन, बिकॉज रेडिएशन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिस तरीके से रेडिएशन कैंसर सेल्स को मारती है, उसके अगेंस्ट जाता है एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स यू शुड नेवर टेक ड्यूरिंग रेडिएशन, बट विटामिन्स यू कैन डेफिनेटली टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जो भी आप करना है, आप आपके डॉक्टर्स को पूछिए कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो that is important. So Sanket is asking one more interesting question about diet. The 6 a.m. to 6 p.m. diet, is it balanced diet means good for health? Now, if you see Sanket, ये जो अभी कल्चर है हमारा कि हम सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने लंच लिया, फिर शाम को चाय पी, फिर डिनर किया, फिर आइसक्रीम खाया, ये वो, दिस इज अ फेयरली रिसेंट वे ऑफ लिविंग। अगर आप कुछ साल पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेंगे या गांव में देखेंगे, तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी, बहुत डिफरेंट थी। काफी लोग तो सुबह कुछ भी नहीं खाते थे, डायरेक्टली एक लंच हो जाता था, एक रात का खाना हो जाता था, वो भी जल्दी हो जाता था। काफी सारी कम्युनिटीज है अभी भी जो सूर्यास्त के पहले खाना खा लेती हैं, and there are reasons for that because that gives
stress to your intestinal tract. It allows good digestion of the food. So these are again very healthy habits to restrict your diet intake, to restrict your calorie intake, to restrict the amount of time. But if you ask me, "Ki, mm, mm, should I change my diet to this diet?" I would say I don't have the perfect answer for you. I don't have any evidence to suggest that it will benefit you. You can try. If it works for you, it works for you. So, then you can see if it, in which way it benefits you. So, for example, in my case, I sort of don't have breakfast now. I just have my coffee in the morning and then directly have lunch. And then I have my dinner at 7:30 in the evening. So from 7:30 in the evening, in the night, I have a glass of milk before I go to bed by 10. Then I directly have lunch. That's my first meal of the day. And it works for me. It helps me to keep my energy levels good and it helps me to keep my weight under control. Although currently my weight has increased, I'm working on reducing it. Um, but you will need to see how how it works for you. The next question is, we take the specific questions a little later. Uh, Raj is asking, is losing weight normal after radiation? No, Mr. Raj. Um, we don't want any patient to lose weight during the course of radiation. And we counter that by asking the patient to eat से आपके शरीर में देयर इज एन एनर्जी डेफिसिट दूसरी बात है उसके ऊपर से हम उस पे इंजेक्शन देते हैं स्पेसिफिकली सो इट कॉजेस सेल किल इन्फ्लेमेशन दैट आवाज भी नहीं है और फोटो भी नहीं है सर। वॉइस भी नहीं है। I hope you can see me now and hear me. यस। Yeah, thank you. Sorry, I think my laptop, uh, something happened, so I'm joined from my phone now. So I was talking about the next important thing here from cancer prevention point of view is habits. Because we see a large number of cancers are coming from bad habits that people may have, such as tobacco chewing, tobacco smoking, alcohol, and that is one of the major cause of cancer. So that is something that we definitely need to work on. Now, it is very common for everyone to say, "Oh, you have bad habits," but actually, these are not habits. These are addictions, and there is a very, very important distinction to be made here. ये कोई आदतें नहीं है पर ये उनकी ऑलमोस्ट मजबूरी बन जाती है तो समझिए अगर कोई
15-16 साल का लड़का है, लड़की है, उन्होंने वो उम्र में सिगरेट पीना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो कभी एक सिगरेट पिया दोस्तों के साथ, फिर 4 हो गए, 10 हो गए, उसके 20 हो गए। बाद में उसकी आदत हो जाती है, और आदत माने वो एक एडिक्शन बन जाती है, वो एक नशा हो जाती है उनको, कि उसके बिना उनका दिमाग ही नहीं चलता है, काम ही नहीं होता है। तो उसको छुड़वाना भी बहुत आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया अरे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अभी छोड़ दो स्मोकिंग, छोड़ दो, उससे नहीं होता है। तो उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें फैमिली का रोल आता है, फैमिली को मोटिवेट करना पड़ेगा, पेशेंट को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये स्मोकिंग छोड़ना है या अल्कोहल छोड़ना है। फिर अगर जरूरत पड़े तो हम काउंसलर्स की मदद लेते हैं, मैजबीन जैसे, या हम साइकेट्रिस्ट को भेजते हैं पेशेंट को, वो कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो उससे फायदा होता है। सो we have to ensure that we don't look at it lightly as this is just a habit, Oh, I have a habit of, say, going for a walk after dinner, and you have a habit of smoking, so I can change my habit, so you can change your habit also. It's not that simple. तो ये हमें ध्यान में रखना है। आपको आपका कोई एक्सपीरियंस है कैंसर के हिसाब से, ये हैबिट्स के ऊपर? डज एनीबडी वांट टू शेयर एनीथिंग? Has anybody here tried to leave smoking, and what has been their journey, smoking या drinking? अगर छुड़वाने की कोशिश की है तो आपको क्या कठिनाई आई है या नहीं आई है, कोई शेयर करना चाहेगा? Any questions about bad habits? Okay. So the next thing for cancer prevention is, are there any vaccines for cancer prevention? ये भी काफी बार हमें सवाल पूछा जाता है. So actually we do have now vaccines, and there are two vaccines which are not against cancer, but they are actually against infections. और ये इन्फेक्शन की वजह से कैंसर होता है। तो फर्स्ट और जो सबसे काफी सालों से, डिकेड से यूज किया जाता है, इज HP या योर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी ये एक इन्फेक्शन है लिवर का, कि जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है। वो वैक्सीन सबने लेना चाहिए। वो अगर लेंगे तो कैंसर, लिवर का कैंसर होने का प्रमाण बहुत कम होता है। उसके 3 शॉट्स रहते हैं। यू कैन टेक दैट एट एनी पॉइंट, आप कभी भी वो ये ले सकते हैं। सेकंड वैक्सीन जो है वो अभी ज्यादा उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो है HPV वैक्सीन या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो ये जो वायरस है, इसकी वजह से सर्विकल कैंसर या बच्चादानी का जो मुंह होता है उसका कैंसर होता है। ये सेकंड कॉमन कैंसर है इंडिया में, तो बहुत सारे औरतों को ये कैंसर होता है। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 9 से 14 की उम्र में देना है। तो अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं या पोते हैं या जो भी है, पोतियां हैं, वो 9 से 14 की उम्र में ये वैक्सीन देना चाहिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको वैक्सीन दे देंगे। 9 से 14 के बीच में करेंगे तो 2 ही लगते हैं इंजेक्शन, और अगर उसके बाद में करेंगे, अप टू द एज ऑफ 26 करेंगे, तो 3 इंजेक्शन लगते हैं। इससे बहुत ही फायदा होगा। इससे जो कैंसर का प्रमाण है, सर्विकल कैंसर का प्रमाण, वो काफी हद तक कम हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है हमारे लिए। तो इसको आप डेफिनेटली अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वैक्सीन? So, Nishrin here. या So, as you या said about the vaccine, like I have a hereditary case of cancer, like my grandmother had, my Masi had, I had. So, for my son, as you said, 9 to 14 years, should I give him any vaccine, or should we consider vaccine for that? So hereditary cancers are a very different type of cancer, and there is no vaccine available as such to prevent from that. Now, HPV vaccine
currently in India is promoted only for girl children, but ideally it should be given for boys also, because it can cause throat cancer also. The HPV virus can cause throat cancer also. So in men it is given to prevent throat cancer, in women it is given to prevent cervical cancer. For somebody like you, Nisreen, who has family history of cancer, the important thing is to identify what is the risk of developing cancers in your family. So your doctors may advise you certain tests like BRCA test, or looking at the genome and understanding what are the mutations that may have happened. And with a certain degree of certainty, they will be able to predict what is the risk for your child, and then accordingly you can work on it. So suppose they say that okay, the risk of breast cancer in your daughter may be slightly higher, then you may have to start screening early. Or in your case of your son, if there is some other type of cancer जिसकी risk बढ़ सकती है, तो you can start screening for that at an earlier age. So knowing your risk will actually help you to identifying what is the risk, and then proactively finding out how to protect yourself from that or your children from that. So it's important to find out what is your genetic risk. Thank you, sir. ममता जी कह रही हैं कि वैक्सीन का रिपीट करें. सो ममता जी, दो वैक्सीन है यहाँ पे. एक वैक्सीन है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बोलते हैं. वो तो सबने लेना चाहिए. वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं, किसी भी उम्र में ले सकते हैं. वो 3 इंजेक्शन होते हैं. उससे लिवर का एक इन्फेक्शन है जिससे पीलिया होता है, वो हम प्रिवेंट करेंगे. क्योंकि वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का इन्फेक्शन होता है, तो उससे कैंसर हो सकता है लिवर का. तो लिवर कैंसर हम प्रोटेक्ट करेंगे. सेकेंड इंजेक्शन है जो HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है. इसमें मेन एम है कि 9 से 14 की उम्र में बच्चों को ये इंजेक्शन दिया जाए, तो उससे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कैंसर होते हैं उसका प्रमाण बहुत ही कम हो जाएगा. ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको दे सकेंगे. आइडियल एज इज 9 to 14, but it can be given up to the age of 26 also. There इन is one बच्चों को more देना question. चाहिए सर, जिनके सभी हुआ बच्चों हुआ को, है सभी उनके, सब. या सबको? नहीं नहीं नहीं, ऑल चिल्ड्रन, सबको, सबको ओके, देना है. ओके. Hmm? So there is one question about my senior was alcoholic and smoker for last 15 years. Now he has changed his habit from last 2 years. Um, how much changes has he got? What is the chance that he will get cancer? अगर कोई आदमी 15 साल या प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्मोकिंग या तंबाकू या अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, तो उनका जो रिस्क है कैंसर होने का, अब जैसे ही ये हैबिट बंद कर देते हैं, उसी दिन से धीरे धीरे कम होना चालू होता है. और स्मोकिंग के हिसाब से हम बोलते हैं कि कैंसर का प्रमाण ज्यादा होता है, पर उसकी वजह से बाकी भी बहुत सारे शरीर पे असर होते हैं. जैसे आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, आपका हार्ट खराब हो जाता है, आपकी नसें खराब होती हैं, आपकी स्किन खराब होती है. सो बहुत सारे फर्क पड़ते हैं. जैसे ही आप स्मोकिंग कम करेंगे, फ्रॉम डे वन itself, some reversible changes will start. Some benefit will start seeing. But for a person like him to actually see, for their cancer risk to go down to the level of a person who's not smoking, it can take 10 to 15 years. तो जो स्मोकिंग और अल्कोहल का शरीर पे असर होता है, उसका असर रिवर्स करने के लिए बहुत साल लगते हैं. वो अचानक से नहीं, कैसा नहीं होगा कि आपने बंद कर दिया और फिर सब ठीक हो गया. 10 से 15 साल लगेंगे उसका असर पूरी तरीके से हमारे शरीर से निकल जाने के लिए. पर जितना जल्दी हो सके उतना, अगर वो बंद कर दे तो अच्छी बात है, तो उतना जल्दी रिवर्सल भी हो जाएगा उसमें. Hepatitis B vaccine is to be taken only once. It need not be repeated. तो आपने एक ही बार लेना है. 5 साल के बाद आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं. अगर आपके टाइटर्स अच्छे हैं तो कोई बात नहीं है. अगर लो है तो एक बूस्टर आप ले सकते हैं.
नाउ कैंसर, ममता जी, ये वैक्सीन जो है वो वैक्सीन कैंसर के लिए नहीं है, वो वैक्सीन है एचपीवी इन्फेक्शन के लिए। उससे कैंसर की प्रमाण कम हो जाती है, बट वो जनरली 26 साल के उम्र के बाद तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होता है। द रीजन इज, ये जो एचपीवी इन्फेक्शन है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो जनरली हम देखते हैं कि कोई भी आदमी या औरत सेक्सुअली एक्टिव बन जाती है, उसके बाद ये वैक्सीन का जो असर है वो उतना नहीं होता है, बिकॉज एचपीवी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन तरीके का इन्फेक्शन है। वो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन को हो जाता है, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज लोगों में वो रह जाता है और उससे कैंसर बनता है। तो अगर आपने ये वैक्सीन वो इन्फेक्शन होने के पहले लिया तो ही उसका असर होता है, बाद में लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा। सो बिफोर somebody becomes sexually active, the ideal age is 9 to 40 इसके लिए। मिस्टर राज इज आस्किंग कि अगर हमारे पास गले में कोई गांठें हैं, नेक नोड्स हैं, तो कैन दे बिकम एंड विच आर बिनाइन, कैन दे डेवलप इनटू कैंसर? राज, दैट इज वेरी वेरी अनलाइकली। Benign lymph nodes will not develop into generally cancer later. So हमने बात की डाइट की, हमने बात की हैबिट्स की, हमने बात की प्रिवेंशन बाय वैक्सीन्स की, और एक चीज इसमें बहुत जरूरी है, वो है एक्सरसाइज। कि हमारे शरीर को एक्टिव रखना है हमें। और अभी तो हम देखते हैं जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जिंदगी अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और वो बिजी हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड से भी ज्यादा बहुत ही बिजी हो गई है। तो उसके वजह से हमारा एक्सरसाइज का, तो यू नो मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज, और एटलीस्ट वी से दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज। एंड दैट बिकम्स अनदर इशू, बिकॉज ये देखा जाता है कि एक्सरसाइज नहीं होगा, और हमारा डाइट अभी बहुत चेंज हो गया है। पहले हम सब्जी रोटी खाते थे, अभी आपको पिज्जा खाना है, अभी हमको मैकडोनल्ड्स जाना है, अभी हमको पास्ता खाना है। तो एक्सरसाइज कम हो गया है, और डाइट बहुत रिच हो गया है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। सो हमारे वजन बढ़ रहे हैं, वजन बढ़ रहे हैं तो बीएमआई बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है शरीर में, और उसके वजह से कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। सॉरी। So basically, exercise is very important to maintain our weight, to maintain our healthy circulation, and also to keep ourselves overall healthy. Now, exercise अगर हम बात करें तो लोग बोलते हैं अरे मुझे तो कहाँ टाइम है जिम जाने के लिए, तो कहाँ अभी इतना तो नहीं है टाइम, या there is a housewife who says अभी मैं कहाँ जाऊंगी। Exercise doesn't mean that you go to the gym and pump iron, or you're running on a treadmill, or you're doing something. There are simple habits that we can inculcate. One is going down for a walk. आप घर से बाहर निकलिए, रोज आधा घंटा चलने के लिए जाइए, और वो चलना भी थोड़ा ऐसे इधर उधर देख के टहलते हुए नहीं, थोड़ा फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन डू दैट, मोस्ट ऑफ अस हैव द एबिलिटी टू डू दैट। वो एक हो गया। अगर आप जिम में जाके कर सकते हैं एक्सरसाइज, वो भी अच्छी बात है। यू आर बिजी इन ऑफिस, देयर आर सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू। जस्ट अवॉइड टेकिंग लिफ्ट्स। आप सीढ़ी से चढ़ के जाइए, चढ़ के आइए। आपका कोई काम है आपके कलीग के पास, उसको फोन करने के बजाय चल के जाइए उनके पास, उनसे बात कीजिए। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। आपका हार्ट रेट बीच बीच में ऊपर नीचे होना चाहिए, थोड़ा पंपिंग ऑफ द हार्ट भी होना चाहिए। नाउ generally we say 10,000 steps is what we should achieve, but the minimum now the data suggests is at least 7,000 steps each one of us should do every day. So I also, right now I'm not wearing, I just had a shower, but I also wear my Fitbit band, and I monitor number of steps I take. And I also try avoiding taking lifts in the hospital also. I keep walking here and there to ensure that I'm getting the exercise. Of course, then I have gym and yoga and other stuff that I do. So we have to find time, and एक ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है उसका कि ये तरीके का एक्सरसाइज करें। आपको जो भाता है, आपको जो पॉसिबल है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है
तो आप नहीं करोगे उसको, आपको मजा नहीं आता। जैसे मुझे बहुत मजा आता है जिम जाके एक्सरसाइज करने में, आई रियली एंजॉय माई योगा सेशंस विद माई योगा टीचर। सो क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई डू इट। पर वो जैसे आपको अच्छा नहीं लगता है तो देन इट विल नॉट वर्क। सो आपको जो भाता है, आपको जो अच्छा लगता है, उस पे आप ध्यान दीजिए। द अदर एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ, कि हमारी जो मानसिक स्थिति है उस पे भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो काफी पॉजिटिव फर्क पड़ता है, काफी उसमें आपको फायदा होगा। तो ये भी एक चीज हमें सोचने जैसी है। एनी क्वेश्चंस ऑन एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ? Mr. Raj is asking that he's worried about losing weight after cancer. So, Mr. Raj, I really don't know the circumstances under which you are going through right now. But अगर आपको weight loss की चिंता है, तो one thing is that of course you have to focus on your diet. Check with your doctors who are treating you currently कि what is the optimal weight for you. और उसके हिसाब से आप डाइटिशियन के पास भी जाके आपका डाइट प्लान बना सकते हैं। Make sure that you are getting good amount of exercise and balance it out, and don't worry about it. You need to work on it. अगर आपको थोड़ा बहुत weight loss हो भी गया, you have to work on compensating that rather than worrying about it. So to summarize, as I said, diet के हिसाब से square diet, healthy diet, and from exercise point of view, daily exercise and habits हमको avoid करनी है, bad habits like addictions like alcohol, tobacco, and maintain a good mental health. Now this is what we can do, and of course knowing your genetic risk and then working towards it. So this is what we can do. Beyond this we cannot do anything much as of now. So हमें हमारा काम करना है कैंसर प्रिवेंशन के लिए. You cannot completely control everything that happens to your body, but at least we do what we can do. We do our best and see what happens. Any questions or comments on cancer prevention? So जो भी हमारा discussion हुआ है, please share it with your family and friends. We'll share the link, YouTube link also with you. And let's make the world free. Maybe not free as of now. We don't have the technology, but at least prevent as many cancers as we can. So if there are no further questions, let's wind up here. We will, this year we missed in December and Jan, but now onwards we'll make sure that we meet every month, and we hope to see you in March. Bye bye. सर प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर कौन सा क्वेश्चन होता जी? मैंने वो सिंगल्स आंसर हो तो गए दे थे दिया। मुझे आज से 20 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो यहाँ से अभी क्वेश्चन कोई चल मेरे जहाँ ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसके जस्ट नीचे। रहा है। हाँ हाँ। तो अब जब वो ठीक हो चुके हैं, अब उसके बाद में उसमें पेन बहुत है। हाँ, तो ये जो और इन्फेक्शन है ना ममता जी, ये जी शिंगल्स, इसको जिसको हम लोग हर्पीस बोलते हैं, जी ये जनरली हमारे शरीर में, हमारी नसों में एक डॉर्मेंट इन्फेक्शन रहता है, ये वायरस रहता है। ये बहुत सारे, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव दिस इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, कोई भी स्ट्रेस हो, वो मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, या कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो, कभी कभी उसके वजह से वो इन्फेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करता है, वो नसों को पूरा अफेक्ट करता है। सो यू विल सी कि वैसे लाइन में आता है इन्फेक्शन। यस
तो और इट इज वेरी पेनफुल क्योंकि वो नस को अफेक्ट करता है, तो वो नस कंटिन्यूअसली वो स्टिमुलस देती रहेगी पेन का, तो बहुत ही पेनफुल रहता है ये। यस। तो शिंगल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप फर्स्ट 24 आवर्स में डॉक्टर के पास जाके एंटीवायरल दवाई चालू करनी है, तो वो उसका प्रमाण कम हो जाता है। प्लान का क्या करना आपको है? अभी वो इन्फेक्शन हो के गया है, ठीक है, जी। तो ये अभी होने हो के चुका। बाद जी। हाँ हीलिंग के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि वो नसों को पूरी तरीके से हील होने में टाइम लगता है। आप आई थिंक प्री गैबालिन पे ऑलरेडी है, वो चालू रखना है। एंटीवायरल्स आपने लिए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, आप डॉक्टर्स ने दिए हैं कि नहीं। ली अगर है दिए हैं, डॉक्टर। हाँ तो वेलकोर उससे, हाँ उससे भी फायदा होगा, उससे भी वेलकोर फायदा होगा। दवाई। एंड तो वो पर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो नसों को जो अफेक्ट करती है जब ये इन्फेक्शन, तो वो हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सो सिंपल थिंग्स लाइक आइस पैक आप लगा सकती हैं वहां पे, या ऊपर से कोई सूदिंग क्रीम लगा सकते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू वेट, अभी मैंने वो विथ सूदिंग उसका क्रीम सर। जल्दी में, सॉरी, विथ सूदिंग क्रीम। विच क्रीम विच सूदिंग क्रीम क्रीम। माने हाँ वो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दे देंगे। सिंपल थिंग लाइक इवन सेटाफिल, ओके जो एक सेट। मॉइस्चराइजर, वो लगाएंगे। अगर वो ड्राई हो गया है एरिया, अभी तो ड्राई क्रस्टिंग है, तो वहां पे आप सिंपल ड्राई हो चुका है, मॉइस्चराइजर फुल लाइक, ड्राई। हाँ, तो सेटाफिल आप लगाएंगे ना, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा। आप उसको फ्रिज में रखिए, उस पे आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं, एलोवेरा को फ्रिज में रखिए, उससे ठंडक मिलेगी आपको। पर ये थोड़ा टाइम लगेगा मैंने उसको हीलिंग के लिए, सो यू हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी टाइम? इट्स वेरी इट मे टेक पेनफुल। मंथ्स ममता जी। ममता जी उसमें महीनों भी लग सकते हैं, क्योंकि वो नस का रहता है ना इन्फेक्शन, तो उसमें टाइम लगता है। तो तीन थोड़ा चार वो बार कब तक दवाइयाँ के चालू लेनी चाहिए रखिएगा। डॉक्टर साहब? सॉरी, डॉक्टर ने एक सवाल पूछा था रिगार्डिंग रेडिएशन के बाद ठीक है। स्किन बहुत थिक हो गई है, मैं स्कैन में आया है, उनके ब्रेस्ट में हाँ हाँ पेन है मैं काफी, तो ये हाँ। आप पे रिजॉल्व होगा या इसके लिए कुछ क्रीम अगर लगाना होगा? आप रिलायंस में ही हमारा ट्रीटमेंट चल रहा उससे था। मेरे ब्रेस्ट में तो कोई वो नहीं पड़ेगा हाँ कुछ। उसमें भी तो थोड़ा पेन बेसिकली अगर हम देखते हैं कि ये रेडिएशन के बाद अगर वहां पे स्किन थिकनिंग हो गया है, होगा। तो टचिंग। वो रिवर्सिबल तभी होता है जब हम लोग इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन करें। तो जैसे हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज चालू रखिए, और मसाज चालू कीजिए रेडिएशन खत्म होने के बाद। ये बहुत जरूरी है ताकि वो ब्रेस्ट सॉफ्ट रहे, सपल रहे, क्योंकि रेडिएशन का या सर्जरी करने के बाद वहां पे होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन माने सूजन आती है, और अगर वो सूजन ज्यादा टाइम रहेगी तो वो थिकनिंग होता है वहां पे रेडिएशन की वजह से। तो इसके लिए एक्सरसाइज आप करते हैं तो वो पूरा एरिया स्ट्रेच होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर मसाज करना है। अगर पेशेंट को अभी कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ स्कैन पे वो थिकनिंग दिख रहा है, देन यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तो आपको सिर्फ वो मसाज और एक्सरसाइज चालू रखनी है। अगर पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो यू मे वांट टू कम बैक एंड शो इट टू अस एंड वील सी कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। But almost all the patients who have received radiation to any part of the body, if they do the scan, the skin will look different. So जैसे किसी को समझिए गले में भी रेडिएशन दिया है, जो साइड रेडिएशन दिया है वहां की चमड़ी थोड़ी थिक हो जाएगी, दैट इज द रेडिएशन इफेक्ट। द ओनली वे टू डील विद इट इज टू प्रिवेंट इट। प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज, मसाज, ये बहुत जरूरी है। Hi, sir. हाय। Sir, my father-in-law is a patient of yours, and my wife is हम्म। in thing. So she asked me to take two question of her. So my first question in behalf of her is कि कैंसर जो है हेरिटरी है, चांसेस है मतलब ये आगे आने के लिए, मतलब उनके जो भी कुछ है नेक्स्ट जनरेशन रहेगा उसमें, तो कितने परसेंट चांसेस है? एंड सेकेंड इज तो अगर हाँ, सेकेंड इज कि इनका जो ये है अभी रेडिएशन चालू है, उसके बाद वो वापस नहीं होने के लिए, कैंसर नहीं आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट प्रिकॉशंस विल बी? ओके, so very important question. So first of all, not all cancers are hereditary.
देर आर वेरी फ्यू कैंसर कि जो जेनेटिक है या हेरिडिटरी है. तो एक है उसमें ब्रेस्ट कैंसर. अराउंड 5 to 10% of breast cancers are hereditary. And some of the patients have this particular genetic mutation called BRCA mutation, जिसकी वजह से वो होते हैं. कुछ कोलॉन कैंसर जो इंटेस्टाइन के कैंसर है वो भी हेरिडिटरी हो सकते हैं. So there are very few cancers which are hereditary. Most of the other cancers are either because of tobacco and other causes, and some of them we don't know the causes as such. तो आपकी फैमिली में जिनको भी कैंसर हुआ है, जो सपोज इफ ही इज टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर मी, then let him come to me, let me assess and discuss. Because typically, if I feel that this cancer is hereditary, in the first consultation itself, I would tell them that you need to get the test done for genetic counseling done. But we can have that conversation again. So, if somebody in the family has cancer, that does not mean the other people in the family will also get cancer. But it's a good wake-up call, and what we discussed, the healthy lifestyle you should follow. The second question is about how do we prevent cancer coming back from after the completion of radiation. So again, depending on the case, there will be different things to do. So for example, if the cancer is caused by tobacco and alcohol, then obviously we have to stop that. Or there are some sharp teeth which are causing cancer, we have to extract those teeth. Uh, if there are any specific things like, for example, prostate cancer is caused by hormones, so we give injections to suppress those hormones. So that each cancer-wise, there are different things to do for protecting, preventing, or rather reducing the chance of this cancer coming back. And one is that we do, things to reduce the risk of cancer coming back. But the other and very important thing is to find out if that cancer has come back early. तो जिसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं कि समझे पेशेंट की अभी ट्रीटमेंट हो गई है पूरी, आप सब कुछ कर रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए, वापस नहीं आने के लिए. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर वो वापस आता है खुदा खास्ता, तो उसको जल्दी हमको पकड़ना है. तो इसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर स्कैन्स दैट योर डॉक्टर्स टेल यू, दैट वी हैव टू डू. सो दैट अगर समझो किसी को वापस आ गया बीमारी, तो जो बहुत ही छोटा है उसी वक्त उसको हम पकड़ लें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा था फिर वो बड़ा हो गया फिर आप डॉक्टर के पास चले गए. So these two things are important. One is how do we prevent it and how do we detect it early. Both things per patient specific, I think you will need to speak to the doctors. Perfect. It's 1 o'clock and it was lovely talking to all of you. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपको मिलने के बाद, थोड़े टाइम के बाद मिले, बट मार्च में हम लोग वापस मिलते हैं. Thank you very much for joining and have a lovely time. Bye bye.